it is showing that. Yeah, I'll admit. My co-host name. Hey, you can also admit. Once I've given you the host rights, na, then it is taken away the co-host rights. No, I'm admitting everyone. Yeah, they have come. Huh? Sammy, I'll make you co-host anyway. Thank you. But you're already co-host. Yeah, but it is not showing to me. Acha. No, you're co-host. Okay. Yeah, now I can see. You can? Okay. Yeah. Brenda ji, shall we start? Yeah. Good evening, ma'am. Yeah, Parul, I think we can. नमस्ते, मैं पारुल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सैमी, ये लाइमलाइट आप पहले मुझे दे दीजिए तो मुझे बोलने में आसानी रहेगी। हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा? इस सबसे बड़े सवाल के बाद जो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जहन में आता है और हमें हॉन्ट करता है हमेशा, वो ये है कि जब हमारी बच्चियों को मंथली पीरियड से स्टार्ट होंगे तो वो कैसे मैनेज करेंगी, हम कैसे मैनेज करेंगे, हम उनकी कैसे हेल्प कर पाएंगे, और वो पूरा प्रोसेस वो समझ पाएंगी कि नहीं, हम उन्हें समझा पाएंगे कि नहीं, क्या होगा? एक माँ का दिल इस बात को सोच सोच के एक पल में 100 बार धड़कता है। माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन जहां वो मैनेज नहीं कर पाती, जहां वो अपने आप को असमर्थ पाती है, वहां वो बेबस हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, हमारे डाउन सिंड्रोम ब्लेस्ड लड़कियां इस सब को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं अगर उन्हें सही समय पर सिखाया जाए। तो इन पीरियड्स के बारे में बच्चों को कब से बताना चाहिए, कैसे उन्हें समय से पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन पर हमारी दोस्त मेघना सुराना बहुत रिसर्च कर रही हैं और एक प्रोग्राम इस पर वो रन कर रही हैं। एक रिसर्च उन्होंने इस पर किया है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी दोस्त मेघना सुराना है। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस सब के बारे में। आपके जो भी डाउट्स होंगे, हमारे साथ डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा रामाचंद्रन है। हमारे साथ और भी पेरेंट्स हैं जो सीनियर्स हैं, जिनके बच्चे इस सब से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। आप उन सब से भी अपने सवाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी दोस्त समीक्षा सांजवान को आमंत्रित करती हूँ कि कोई वो मेघना को बुलाएं और बातों का सिलसिला शुरू करें। Samiksha. Good evening, everyone. And yes, as Parul rightly mentioned, today we are gathered to discuss about a secret topic which we had never seen our mothers or senior ladies of the family discussing or talking about. Most of us got to know about it only when we encountered it. And those 5 days of menstruational cycle, which is a biological process, were stigmatizing. For us, the parents and caregivers of the persons with Down syndrome, it becomes more important to discuss, as there are many more wrong notions get attached to it as it comes along with a diagnosis, which is considered in itself a taboo. So don't worry, we are not going to start another campaign to remove the period poverty or something like that, but we will understand about how to prepare our girl child for this phase, and by discussing the importance of menstruational hygiene. And today we have with us our own fellow revolutionary mom, Meghna Surana. She's been guiding us on many other aspects, and today again she is with us with this important discussion. Meghna, straight away to you. Thank you, Sammy. Good evening, everyone. Like Parul and Sammy, dono ne, like they just shared that it has been a taboo topic, and like Parul rightly said कि इस चीज की हमें हमेशा से फिक्र रहती है. And I will start with my own experience. First of all, is English fine or should I speak in Hindi? मेघना मिक्स रखेंगे तो अच्छा रहेगा सभी के लिए.
So I'll start with my own experience. Years ago, I think उन्नति 4-5 साल की थी. तब चेन्नई में मैं संध्या से मिली थी. आप में से बहुत लोग संध्या को जानते होंगे. आरती की मम्मा है संध्या. एंड बहुत छोटी थी उन्नति, 4-5 साल की थी. फिर भी आई थिंक हम मदर्स just can't stop, thinking about this once you have a daughter. And I went up to her and I asked her, does Aarti get her period? And she looked at me and she's like, why not? I was still that mother who was learning and who was trying to understand that can a person with Down syndrome be like others? So that was my first question. And then I asked her, how do you handle it? मैंने फिर संध्या से पूछा कि आप कैसे manage करते हो? Then Sandhya said, why should I handle it? She handles it. And I was so shocked. I was like, आरती अपने आप मैनेज करती है? संध्या को समझ नहीं आता कि मैं क्यों shocked हूँ. And then she was like, yes, Meghna, Aarti manages it on her own. And now I don't even know when she gets her period every month. So I was totally zapped. मुझे लगा था इसे कैसे हो सकता है? Because you have a child with disability, right? That's what you've been told. So how is it possible? And now it's been almost 2 years since when Unnati got her first period. Unnati is now 16. अब मुझे भी नहीं पता रहता when Unnati gets her period. So to all the moms of young girls here, I want to tell you कि अगर हम सही से बच्चों को ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको शायद नहीं पता चलेगा, अनलेस एंड अनटिल उन्नति के बहुत सिवियर क्रैम्प्स हो रहे हों तो मुझे पता रहता है, या जिस दिन वो अपने स्पोर्ट्स क्लास से जल्दी आ जाती है तो मैं उसको पूछ ही लेती हूँ तो शी इज लाइक हाँ मम्मा पैर बहुत दुख रहे हैं. बाकी दे कैन टोटली मैनेज ऑन देयर ओन, बट इट्स अ प्रोसेस. तो डर तो मुझे भी था. और जब इनफैक्ट जब उन्नति व्हेन शी गॉट हर पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद भी 2-3 महीने तक मैं बहुत घबराई भी रहती थी. बट अब तो 2 साल हो गए, अब वो डर भी चला गया एंड शी इज मैनेजिंग इट वेरी वेल. एंड आई एम श्योर मैंने जितने ओल्डर गर्ल्स के मॉम्स के साथ मेरा जो इंटरेक्शन रहा है, मेजॉरिटी यही मैंने सुना है. इनफैक्ट लास्ट मंथ हमने पेंटेड रेड के साथ एक सर्वे भी किया था और सर्वे के रिजल्ट्स हमारे पास हैं. हम लास्ट वीक ही पेंटेड रेड और हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे. हम एक सेशन उस सर्वे के रिजल्ट्स पर भी लेने वाले हैं. उसमें 92% ऑफ द मॉम्स आई थिंक सेड कि हमारे बच्चे इजीली मैनेज कर लेते हैं, व्हिच इज वेरी बिग. द नंबर इज वेरी बिग. सो दिस वाज माय the first few memories I have about having a daughter and having met another mom with a girl of a daughter who had her period. And now I will share my journey कि मेरे लिए ये कैसा रहा. So I think मैंने उन्नति को, जब उन्नति 9-10 साल की थी ना, तब से मैंने उसको बताना चालू कर दिया था. और मैंने ऐसे बताना चालू किया था, I used to tell her when I would get my period कि उन्नति मम्मा is on her period. आज मम्मा के पैर में दर्द है, मम्मा ये नहीं कर पाएगी. एंड शुरू में शायद वो इतना ध्यान नहीं देती थी, पर बाद में वो पूछने लगी इसका मतलब क्या होता है, आप हर बार ये बोलने लग जाते हो. सो फिर मैंने उसको बताया कि 3-4 दिन मेरे बॉडी में से ब्लड निकलता है और मैं कभी कभी वीक फील करती हूँ. तो फिर उसने ना मेरा हाथ ऐसे चेक किया, शी चेक माई हैंड कि कहाँ से ब्लड निकलता है मम्मा. So I took her with me in the toilet to show her. But उससे पहले, this is my suggestion to all parents here, आप उन्हें sensitize करेंगे क्योंकि कुछ हमारे बच्चे can be scared of blood. They'll be scared when they see blood. So पहले से उनको prepare करना होगा कि आप blood देख रहे हो. And then obviously she didn't like it the first time she saw it. She still doesn't like it. Then I started telling her कि ऐसा सबके साथ होता है. And obviously उसका next question यही था कि मेरे साथ भी होगा क्या. तो I told her होगा ही, सबके साथ होता है. And एक दिन I remember she also cried. She's like मेरे को तो ये नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को ये नहीं चाहिए. तो then मैंने ना मेरे बचपन की फोटोज उसको दिखाई थी. When I was small मैं ऐसी दिखती थी. फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं थोड़ा डिफरेंट दिखने लगी. अब मैं और बड़ी हो गई. आई ट्राई टू शो हर द बॉडीली चेंजेस. वो कितना समझ पाई आई डोंट नो. फिर मैंने उसको ये बताया कि आप भी अब बड़े हो रहे हो. शी स्टार्टेड गेटिंग हेयर अंडर आर्म्स में.
थोड़ा ब्रेस्ट साइज उसका डेवलप होने लगा था, प्यूबिक हेयर. सो दीज आर ऑल्सो साइंस विच आई फील कि आप मदर्स यू हैव टू वॉच आउट फॉर, कि अगर आपको ये डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं तो विच मीन्स कि यू आर नियरिंग दैट स्टेज. सो पहले से हमें प्रिपेयर करना ही होगा. एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग हर कि ऐसा होगा, ऐसे हमें पैड लगाना होता है. फिर व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट पीरियड, एंड मैंने उसको इसलिए भी प्रिपेयर किया कि सपोज कभी आप स्कूल में हो और आपके साथ ऐसा हो और आपको रियलाइज हो कि आपकी पैंटी स्टेन्ड हो गई है, तो फिर आपको क्या करना होगा. आपको मैम के पास जाना होगा, आपको मैम को बताना होगा ये सिचुएशन. और घर पे अगर मैं नहीं हूं तो चाची से आपको बात करना होगा, चाची नहीं है तो दादी से बात करना होगा. तो मैंने ना उसको सपोर्ट भी बता दिया था कि इफ आई एम नॉट देयर, यू नो whom you have to approach. Luckily when she got her period, I was there at home, and it took time. एक साथ एक बार में उसने नहीं सीखा. It took me 3 months and I had to break it down in steps कि ऐसे हमें सैनिटरी नैपकिन लगाना होता है. मैंने हमेशा से डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन यूज किए हैं, जिनमें वो स्टिक ऑन्स होते हैं जो हम पैंटी पे स्टिक कर सकते हैं. आप जो भी आप खुद यूज करते हैं, आइडियली मुझे लगता है आपको वही सिखाना चाहिए, बिकॉज वो इजियर होता है. बट आई ऑल्सो फील कि डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन जो मुझे समझ आता है, फ्रैंकली मैंने और कुछ कभी यूज किया नहीं है, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज दैट विच इज बेटर, बट आई फील कि इट्स द इजीएस्ट टू हैंडल. एंड देन आई टॉट हर कि आपको कैसे वो स्टिक करना होगा. फिर मैंने उसको ये भी सिखाया कि वो जो विंग्स हैं वो आपको कैसे स्टिक करने होंगे सो दैट इट डज नॉट मूव आउट ऑफ प्लेस. फिर जैसे जो सैनिटरी नैपकिन द वंस दैट वी यूज, उसमें 2 साइजेस आते हैं, एक रेगुलर और एक एक्सेल साइज. सो आई टोल्ड हर जब आप स्कूल जाते हो या जब आप घर से बाहर जाते हो जहां आप बहुत देर तक वापस चेंज नहीं कर पाओगे, वहां आपको एक्सेल साइज यूज करना है. एंड शुरू में मैं ऐसा करती थी, मैं 3 months का मेरे फोन में अलार्म लगा के रखती थी, टाइमर 3 hours का, every 3 hours. So when the timer would go, I would tell her, Unnati, it's 3 hours now, you have to go change your pad. First time मैंने ऐसे किया. Second time मैंने उसी को समझा दिया कि अभी इतने बजे हैं, 3 hours काउंट करो, आपको आके चेंज करना है. शुरू में ऐसे ही था कि every 3 hours भले आपका pad is fully used or not, you have to change. Now over a period of time वो खुद समझ गई, वो खुद ही she knows कि it's not fully used, क्योंकि फर्स्ट डे उतना फ्लो होता नहीं है, तो वो उसको और भी लंबा यूज कर लेती है या कम यूज कर लेती है या जल्दी चेंज कर देती है. अब उसको समझ आ गया है. बट शुरू में मैंने वो टाइमर ही सेट कर दिया था, बिकॉज ऑलरेडी इतनी चीजें सीख रही थी, एंड आई एम श्योर शी मस्ट हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल चेंजेस ऑल्सो. तो बहुत सारा, I didn't want to burden her with too much information at one time. I wanted her to take it slow. So I tried to make it easy for her that way. Next important part was teaching her how to dispose it. So the sanitary napkin that we use, usme साथ ही में you get this wrapper along with the napkin. In case the napkins that you use do not have a wrapper, my suggestion to all you moms will be कि newspaper के cuttings आप करके you yourself keep it in the drawer of the bathroom for the child. Make it easier. इतना हम थोड़ी थोड़ी चीजें कर सकते हैं to make it easier. So wrapping it, throwing it in the dustbin, seeing that the dustbin lid is closed, क्योंकि थोड़े बच्चे ना जल्दी में भी होते, डाल दिए चले गए. So this is another thing that we have to watch out for कि उनके washrooms में dustbins with lids वाले हों. And then washing her hand with soap. This I had to insist कि ऐसे हाथ धो के नहीं निकलना है. You have to wash your hands with soap. Also keeping the genital area clean. अपने vagina को भी clean रखना है आपको. So we have a health faucet, जो भी है, mug है, whatever, जो भी आपके यहाँ facility हो, उस area को भी आपको clean रखना है. So ये मैंने I had made it very clear कि this is how it goes. आपको ऐसे ही इसको use करना है. Then I realized कि जब एक दो बार जब उन्नति की पैंटी स्टेन हुई, she hated to wash it. मतलब वो उसको टैप के नीचे ऐसे पकड़ के गीला करके वहीं पे छोड़ देती थी. She didn't want to touch it to wash it. फिर जब मैंने उसको डांटा तो मैंने देखा कि वो उसको भी न्यूज़पेपर में रैप करके डस्टबिन में थ्रो कर देती थी कि अगर मम्मी को पता चला तो मम्मी तो वापस मुझे डांट देगी और मुझे वॉश करना पड़ेगा. So फिर मैंने उसका ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि you first put it under running water and then I gave her a small tub
that you put surf and water in this and you मतलब उसको soak करके छोड़ दो. After an hour, the stain will go off. Then you wash it under running water again, rinse it and dry it. So this also took time. ये भी हमको थोड़ा time लगा. हर बार I had to look out for this and teach her. This I think उसका I don't know if it was a sensory issue या उसको वो पसंद ही नहीं आता था. वो ऐसे करके उसको वहां रख देती थी जैसे पता नहीं क्या चीज है. And then I would tell her कि आपको ऐसा लग रहा है, do you think mama will like to clean it? पर जब मैंने डस्टबिन में देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो शॉर्टकट निकाल लेगी. And that's not how it's going to work. So फिर I taught her how to soak it and leave it. उसके बाद आप वॉश करोगे तो आपको इतना गंदा नहीं लगेगा. Another important thing was school, because वो स्कूल जा रही थी. First time when she got her period, I made her miss school. एक दिन मैंने स्कूल स्किप करवाया था because मुझे पूरे दिन उसको मॉनिटर करना था. सेकेंड टाइम एक दिन के लिए मिस करवाया था, उसके बाद मैंने नहीं मिस करवाया बिकॉज नहीं तो फिर वो भी हैबिट पड़ जाती कि चलो हर बार स्कूल मिस कर लो. आई मेड इट अ पॉइंट टू इन्फॉर्म द स्कूल. मैंने स्कूल को मेल किया उसके टीचर्स को कि शी आप लोग चेक करते रहना रेगुलरली. एंड हमने स्कूल के लिए ना एक किट बनाई, अभी भी उसके बैग में है. एक एक्स्ट्रा पैंटी, 2 सैनिटरी नैपकिन्स और वाइप्स, क्योंकि स्कूल में हर बार जरूरी नहीं हो सोप हो, तो जो वाइप्स होती हैं मैंने वो वाइप्स एंड सैनिटाइजर ये सब उसके किट में डाला हुआ है. एंड शी नोज नाउ कि wherever she is traveling, so even when we are traveling by car or out like a long drive or something, or when she is traveling to school, or when we are flying, हम लोग जब फ्लाइट में होते हैं, she always has to have that kit with her. वो उसको पता है कि वो किट उसको हमेशा रखना ही है. Then she knows that, so sometimes she does, so like when she's going for parties and all, so I make it a point to give her a sling bag जिसमें वो सब आ जाए, because हर जगह ना बच्चे नहीं comfortable होते वो pouch निकाल के ले जाने में, because ये एक age होती है when you're a little, though I've told her there is nothing to be ashamed of, but I know that at this age उनको they are not comfortable, especially when boys are around. हम कितना भी बोलें कि it's okay, but वो age thing है. So I have got her a sling, that with the sling you can walk to the toilet also, no one is going to question you, so that वो इस चीज से भी थोड़ी comfortable हो जाए. Another thing I noticed once when she'd gone to a party, वो शायद कोई toilet use उसने किया होगा और वहां पे probably that toilet did not have a dustbin. So उसने क्या किया, she wrapped the napkin and she got it back home in her sling bag. That again I had to teach her that you cannot do that. उस टॉयलेट में नहीं होगा, बाहर जहां सिंक एरिया कहीं ना कहीं होगा. यू हैव टू थ्रो इट, वॉश योर हैंड. सो व्हाट आई फील इज कि कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहती है, एज इन हाउ द चाइल्ड ग्रोज, एज इन हाउ यू ग्रो एज अ मदर. अनदर थिंग जो मैं शुरू में ध्यान रखती थी, रात को आई वुड पुट एन एक्स्ट्रा बेडशीट ऑन हर बेडशीट, बिकॉज इनिशियल फ्यू टाइम्स एट नाइट व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, द पैड माइट मूव आउट ऑफ प्लेस, और फिर अगर वो बेडशीट स्टेन होती है, इट इज एम्बैरेसिंग फॉर द चाइल्ड. आपके लिए भी काम बहुत फैल जाता है if the mattress is stained and all that. So for a few months I would put an extra sheet on her bedsheet for her to feel comfortable about it. Other thing which now I do is she has a period tracker. हमने एक ट्रैकर बनाया हुआ है. अब तो उसके फोन में ऐप है, पर जब उसके पास फोन नहीं था तब हमने एक चार्ट, मंथली चार्ट जैसा बनाया हुआ था, where we would mark. So 16th, 17th, 18th, 19th, she gets her period for 4 days. So I would tell her next month, around the 13th, be prepared. 3 days पहले count कर. So you just be prepared कि इस time के आसपास, wherever you are, you're always carrying a pad with you. Now she knows it. अब तो उसका phone में app है, so she knows it also. But this is something which you will have to do initially to train the child, because for them to remember every time. And I am sure अब तो क्या होता है ना, there are symptoms also. So we kind of know कि if she's like she gets a boil on her body normally, for me that is a sign कि अगर ये boil आया है या ये pimple आया है, मतलब she's about to get her period. I know it, and for her she knows it because of her tracker. तो ये भी एक चीज शुरू में. And I also remember the first 6 months her periods were not regular. So कभी 15 days में आ रहे थे, कभी 1.5 months हो रहा था. Now it is kind of regular, almost every month. So this is one thing I want to say कि अगर 6-8 months के बाद भी regular नहीं होते हैं period, then you really need to see a gynecologist. 6 to 8 months, maybe it might be regular because the body is still trying to get used to it. But
if it is still not regular, then there could be something which we need to, it's best to rule out कि कुछ miss out ना हो जाए हमसे. It's best to rule out कि एक बार हम gynecologist से जरूर मिलें. Secondly, I feel कि अगर initial few months में जब आप अपनी daughter को assist कर रहे हो, अगर बहुत ज्यादा foul smell है, तो I think तब भी आपको एक बार गायनेक से मिलना चाहिए. Third, I feel कि हम सब जानते हैं cramps are normal, you know, there will be pain in the body. थोड़े से mood issues हमें पता चल जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है बच्चा. As mothers हमें experience है, हमें पता है, अगर वो ज्यादा हो रहा है, मतलब the pain is unbearable, it's stretching for too long, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, please see a doctor. And if you're not sure कि कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, better is जाके मिलना. Don't live with that doubt कि should I go. एक gynecologist से मिलने में कोई problem नहीं है. Only thing is meet the right person जिसे पता हो. And from whatever I understand, जितना मैंने समझा है, I don't think कि इसके लिए कोई हमें specific gynecologist के पास जाने की जरूरत है. A good gynecologist should be good enough. Another important thing that I would like to share here is हमने जब ये सर्वे लिया था पेंटेड रेड के साथ, तो किसी ने हमारे साथ शेयर किया कि they were suggested by the doctor to get the uterus removed. और ये मैंने पहले भी और भी किसी से सुना है. अगर आप ऐसे कोई भी सजेशन सुने, please do not follow them. Yeah, I would tell you कि please consult Rekha Ma first before you take any drastic step like this, because it's not just about those 4 days of menstruation. Your uterus is doing a lot more to your body. It's producing hormones. For a woman, everything. और हमने अभी जो हम पेंटेड रेड के साथ काम करें, I will be taking one more session with painted red to explain in detail जो हम हमारा अभी research कर रहे हैं. It is not about 4 days. पूरे 28 दिन वो यूट्रस काम करता है. There are 4 stages. There are 4 phases. Every phase is important. Every phase is important. तो वो यूट्रस रिमूव करने से जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हैंडल करना is going to be much more difficult than just training your child for these 4 days. It's much easier कि हम ये 4 दिन के लिए ट्रेन करें. And another very important thing जो मैंने इस बार कुछ पेरेंट्स से सुना था, एक ना हम it's natural, हम पेरेंट्स ना कई बार पूछ लेते हैं कि आपकी डॉटर कितनी बार में समझी, 2 months में, 3 months में, किसी की 6 months में. इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. इसका कोई बेंचमार्क नहीं है कि इनका बच्चा 3 बार में समझा, मेरा 6 बार में नहीं समझा. Every child is different. हर कोई अलग तरीके से समझता है, हर कोई. So just have the patience. समझेंगे. First and foremost, have the belief, have the faith in your child. है क्या इसकी एक सैनिटरी नैपकिन ही तो लगाना. मुझे कभी कभी लगता है हम ही इसको बहुत बड़ा इश्यू बना देते हैं. So true. It's just about sanitary napkin सही से लगाना है. 4 दिन you have to live with it. That's it. हाँ, अगर 4 दिन से ज्यादा हो रहा है, 6 days हो रहे हैं, 7 days हो रहे हैं, बच्चा बहुत पेन में है, कोई additional problems है, then definitely consult a doctor. But if it is only about this, do not. In fact, as a mother also, जब आप भी अपने बच्चे से बात करें ना, talk about it very naturally. कई बार हम ही उसको नहीं बताओ, ऐसे नहीं करो. हमने इतना बड़ा उसके ऊपर एक इतना बड़ा हवा हम ही ने बना दिया है कि वो बच्चा बेचारा ऐसे ही डर जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया. Let us accept it very naturally कि this is a part, just like how our hair grows and we have to go for a haircut. It's a very natural phenomenon of your body that is happening. And then later I remember once when Unnati asked me कि boys को भी होता है क्या, भैया को भी होता है क्या. So I told her boys को होता है पर differently होता है, उनको bleeding नहीं होती, उनको कुछ और होता है. So that she does not feel कि मैं different हूँ. होता ही है, boys also face puberty, they have their own challenges. And I told her देख भैया के मुश आ गई है. So everybody हर किसी की body में different होता है. There are times आजकल भी ऐसा होता है when she tells me कि मम्मा ये finish नहीं हो सकता क्या, every month जरूरी है क्या. But I feel वो तो हम भी कई बार सोचते हैं ना, even we think I just want to get done with it. So I guess that is natural. That's really natural. Another thing which I noticed कि and I think कि उन्नति जो योगा करती है,
और जो ब्रेथ वर्क, जो उसके योगा सेशंस में उनकी जो योगा मैम ब्रेथ वर्क वगैरह सिखाती हैं, आई थिंक उससे भी इट हेल्प्स डेफिनेटली इन मैनेजिंग द पेन. So this, I was just thinking like half an hour ago, I'll probably talk to Rekhama, and one of the future sessions we can invite Unnati's yoga teacher, जो specifically वो इसके लिए जो yoga poses सिखाती है ना, हम सब सीख सकते हैं as mothers और अपने बच्चों को इसके लिए train कर सकते हैं. And I think पर इसमें ये भी है कि शायद वो period के time पे योगा नहीं करवाती. I don't know exactly, she'll be the right person to guide you. But there are certain yoga poses which kind of help to, lessen the pain and kind of handle the situation better. And she also does some breathing exercises for this. तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सोच सकते हैं. Other thing, I heard one mother tell me कि I tell my daughter to drink less water so that उसको बार-बार toilet नहीं जाना पड़े. That's not done. हमारे बच्चे वैसे भी पानी कम पीते हैं और फिर हम उनको अगर ये बोल देंगे कि पानी मत पियो, we have to try and normalize it as much as possible कि जो हम महीने के बाकी 25 दिन कर रहे हैं, हमें 5 दिन भी वही करना है. There is nothing like ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो. As normal as they can be. आपको स्पोर्ट्स खेलना, आप स्पोर्ट्स खेलो, आपको डांस जाना, आप डांस जाओ, जो आप कर रहे हो आप सब करो. We have to make them feel very, very comfortable about it. So this is what I had to share. If any of you would like to ask any Hey, questions. Meghna, that was the most elaborate subject, and my God, how easily you've handled it. I think on any platform from now, we are going to keep you in charge of the red dot. You are now taking over. But I have 3 points here after having listened to you. One is, sometimes if the parents find it difficult to break the information, they can always have their friends or a good friend of theirs or any other caregivers or family members who are closer to your child to sit down and break it down, explain to them. One. Second important thing is, today, Meghna, things are so easy. You have disposable underwears. I know I hate washing. So I have the same habit as Unnati. I have a habit of disposing everything. So I used to get that for Bubbly even 30 years ago. So I want you to understand that things are not as difficult. You also get beautiful bags to put them, to dispose it off. You get, what they call perfumed little pouches to put your, things have become so beautiful in the world. Also, important thing is that sometimes you might not remember the date, but they will remember. And Bubbly used to mark the calendar herself. We never had digital anything. It was a calendar. And she would tear off the pages and say, yes, I think this is my date and it's coming. More importantly, I don't think we should stop them from running, playing. Yes, we do take away yoga for 3 days because having been into the yoga instruction course myself, we don't allow it because there can be so many other things that happen. More importantly, I would like to mention to all of them that at the time of menstruation, the first time, it's always nice to have a direct talk with a beautiful doctor who can sit down and make it sound like it happens to anybody, you, me, everyone. And there will be that rapport that they build up with the doctor too. So they can tell the doctors about. Another thing, Meghna, I suddenly realized was there is a big thing called pain management. Our children have an amazing threshold for pain. If you have noticed that even as children, they fall, they don't cry that easily. For them, it takes a little time to, sort of react to it. So I feel that the pain is something that we are talking about. They might not even realize it. Also, when you use, I think, pubic hair and removal the pubic hair is very important. Please understand, parents, people don't talk about these things, but there are disposable razors and they're very, very easy to use today. Please give them a pack. Start using it on them as soon as you see the hair growing, so that, there is the hygiene aspect is so important for us. And removing underarm hair and making them feel good about themselves. Because who wants to smell foul, especially when you are going out for a party or you're going, sort of other friends. So all these very, very small things that might sound small,
but they're not small. Make a list of all these things. And if you want the names of the products, we will send you the entire list. I think it's important for us to tell you where it's available, how you can go and get it. And I think we should stop brushing all this under the carpet. Also, if you want to learn about when to start teaching them about good touch, bad touch, how to be careful about their own bodies, how close to get to anyone who is, like how to understand body language. It's very important. From the perception that we have, we don't teach them a lot of things. Like, okay, this boy is making a pass, it's fun, it's good, you know how to handle it, but sometimes it can be embarrassing, it can be very hurting. So I think we have to build up that courage in our children, which makes them feel, I am ready for any situation. And let me tell you that they also reach menopause as quickly as we do. So if you think the periods is going to last, Meghna, there's going to be a time when there's something called a menopause. And Bubbly got her menopause very early, I think because she started her periods also very early by 12. So by 38, she was done and dusted. And she got it once in 10 months after that. So the cycles and the way the body reacts is just like ours. And yes, there was a lot of mood disorders at that time. So those are things we'll come to later. We're just talking about the beginning, not about the end. So yes, I will ask somebody else you can ask your questions, and anything else you want, please open up. This is only for you guys. Sorry, I'm not showing you my face, but I've come back from Lucknow and I am absolutely full of so many other things in my head. Okay, love you all very much. Parul, take over. रेखा माँ, आपसे एक और चीज को एड्रेस करने के लिए हम गुजारिश करेंगे कि जो मेघना ने बात उठाई थी यूट्रस रिमूव करने की, उसके बारे में भी आप प्लीज जाते जाते हमें बताएं. नो हम कहाँ जा रहे हैं, हम आपके साथ ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं यार. हम तो अभी के लिए all 32 years, you've given me 102 target, baby. I'm not going. But yes, Bubbly met the gynecologist when she was 13, and she asked her to remove. She said, "Can you remove the organ that creates all this confusion?" And the gynecologist said, "Perfect, I'll do it tomorrow morning." But 10 years later, when there are lots of other changes and you won't be a beautiful young lady, and you might want with a boy, you might want to have a child, you might want to have so many things, Bubbly. So she said, okay, then let's talk about something else. What happens if you remove it? The first reaction was, you can become old very quickly. You can get arthritis. So our entire body depends on our organs. Why do we touch our organs? Because we think we won't be able to handle it. Lots of people in Tamil Nadu have actually forced our gynaes to remove the uterus because said we can't handle it. Why are you handling it? This is about the person who knows how to handle it. You have already decided in your ridiculous minds that they're not capable. I'm talking about 30 years ago when Bubbly could handle it. So aapko kya lagta hai कि today's world, they're watching television, everything is open on that. Like you can look at a pad, and a 5-year-old is going to ask you, "Ma, wo kya hota hai?" So when there is so much openness, so much of it talking about, why don't you teach them the right? If you can teach them to write, you can teach them to talk, you can teach them to run, play, swim. What is difficult about my body? Don't you want to teach them to have a bath? Arthritis, only minor way of putting it. The hormonal changes that happen in a child whose organ has been removed. This is one of the most, you cannot imagine the mood disorders. The vitamin B content goes down completely. There will be a whole lot of backlashes which you will never realize later on. You'll never realize it. Even for a 40-year-old, they think 100 times. Even excessive bleeding can be handled, but not removal of a uterus. I tell every gynae this. This is an easy way of getting away with it because they don't know how to handle it. But I only tell parents, my uterus, I bled for 10 years, excessive bleeding from 40 to 50. I said, I'm not giving you my organ.
No, you will not touch one of my organs. Let it take its due course. It'll happen. But don't be in a hurry, my friends. Don't be in a hurry. Okay? Please wait. Things are happening. They're happening your way. And I think more men, Ma, you got on mute. it's not as if they do not realize that their daughters are also coming of age. They are at the pubertal age when they should also be helping their wives. Ma, you got Would mute. actually, Sammy, Yeah. Rahul would handle it with Bubbly beautifully. I taught him that. And I said, this is something that the whole family must take charge of. It's not just me. If I'm out, then you have to look after her and make sure that she is not in a danger zone, or that if she needs to go to a toilet, she doesn't know where to go, Rahul. So you have to guide her. Ma, you on mute. Responsibility for that, total responsibility. So your other family members must have a meeting. The meetings are very important. Family meetings on awareness of what this child will need, how to put it together, get everybody organized in the family, give them all a small thing to do. Because when you have, I was in Lucknow, there are 18 members in the family. Come on, don't tell me they don't have some responsibility towards this little child. This child is growing up. Let's all take fun and responsibility. India is such a beautiful place if we give them the responsibility. आधा time it's my fault. हमने पूछा ही नहीं है तो हमको क्या मालूम है what they're asking, what we want from them. So yes, put your thoughts together. I had caregivers right through my life. I have never worried. I have always told somebody, yes, come in, I need your help. Ask for their help, because you're like, I have some parents who say, how can I ask? They are busy people. No one is that busy. No one. 2 hours a day. Your child also needs that change of scene. Yes, there's so many things we can do, my friends, together. Or you can call some of our Humsafar members. We are there. We stand next to you. We come to your house. And we will keep your child for those 3 days if you find it difficult. I'm always ready. You tell me where you are. I will fly into your houses. I just need comfort food and the rest of it. You can leave me alone. Thank you. Thank you all very much. Do not worry about your children. They have a great future if you are an empowered mother. That's all. Sorry, empowered fathers. There's one father here who is Shivram Singh Yadav. Sir, I salute you for coming in for this meeting. Hats off to you. Yes. Good for you, sir. Yeah. Yes, Parul, you can take over. Parul, I have to add 2 more things. Can I? Yes, Magna, go ahead. Yes, please. There is a channel on YouTube. It's called Hello Periods. It's in English also, और Hindi में भी है, Hello Periods. I would recommend every mother to watch it. And अगर आप comfortable है तो please show it to your children also. उसमें से कुछ एक visuals ऐसे हैं जो शायद बच्चे थोड़ा सा देख के uncomfortable हो because they show the entire vagina and all that. But I guess once you prepare the child for it, it's a beautiful video. बहुत अच्छे से इसमें explain किया गया. It's called Hello Periods. English and Hindi में तो है. If it is there in any other language, I haven't checked. That is one thing. And another thing, when our children, start menstruating, there is a distribution of weight in the body, and thoda sa lower part of the body thoda heavy ho jata hai. So rashes के भी chances बढ़ते हैं. एक तो sanitary napkins जो disposable, खासकर जो disposable sanitary napkins होते हैं, they have a synthetic lining. और बच्चा लगातार उसे 4 दिन पहन रहा है, so rashes के chances होते हैं. Watch out for that. Maybe sometimes the child is not aware, like Rekha Ma mentioned. The pain threshold is high. If the child is not aware, but the child is uncomfortable, so switch over. So I'm using Noa pads. I'm just sharing it. वो उतना synthetic नहीं है. Maybe switch over to something which is more comfortable, or kind of help the child to get over those rashes in whatever way you can. This is something you'll have to look out for if the child does not tell you and you feel कि कुछ discomfort है. Yeah, that's why, Meghna, it's important to check the pubic area at least once in a while. More important, that is why I said when you remove the hair, there are less chances of getting these warts. You know what happens? The hair follicles are constantly being pulled at, and one of the hair follicles could be stronger. When you pull at it, when you are taking it off, or your pads, or something happens that leads to a sort of a boil. We have seen this in many of our children where the boils are there, whether it's men or women.
when it is about hair follicles. See, these are the areas where the warts will come in. So cleaning it up and keeping it absolutely, smooth and neat, and using cream, and also get yourself checked with a skin specialist to see whether your body is more prone, because like so many people break out in acne. I haven't really seen persons with Down syndrome breaking out in acne, except if there is because their skin is so beautiful. You'll see all our children have lovely skin. But sometimes if there is a lot of stress, they will have warts and moles at the back, on their backs. So please check their skin constantly, because at the back, they won't be able to see it. And these are things that we noticed that need to be addressed as the child is growing older. And dandruff. And if they are prone to dandruff, please remember the dandruff finds various places to attack the child. So it doesn't have to be that the hair is only on the hair, on the head. It can be even on the eyebrows. It can be anywhere. So dandruff is a dangerous thing that you have to address. So keeping a skin specialist, if you want, we'll give you the names in various places. We need to address all these issues. And yes, like you said, Meghna, yes, warts are very important. And instead of watching any other programs, look for the programs that are educative on the subject, but don't do it continuously, because sometimes, when they go into this, they can also imagine something else. So what I would ask them to do is, instead of, what is that favorite program, Sammy, that they all watch? What's that? तारक मेहता का उल्टा चश्मा. The Kat Mehta Ka Ulta Chashma, and get to the direct chashma, which is dealing directly, hitting at them and educating them. You can make small videos yourself. You can make a beautiful chart. You can make a lovely, I believe that pictorial charts make a lot of difference. I was telling Meghna today that the more pictorial it is, whether it is the uterus, whether it is the vagina, whether parts of your body, as much as we show them, show the breast development, because they get frightened sometimes when they have the breast suddenly starts growing and they can't understand it. But they've been touching you and feeling you, they will understand it. So let them touch, feel, and they learn through all this, because they are very highly sensitive individuals and also very frightened of certain things. So yes, do not put them on the pill. If anywhere in the US, they put them on the pill so that they don't get pregnant. Now, I am worried about all these things, because as it is, there is a chance of obesity. And you know it, I know it, because of the hormonal changes. Please be very careful what you are doing too. And when something like this happens, please call for a meeting. We will tell you that these are things that we don't do with our children, because already we have thyroid imbalances, whether it is hypo or hyper. So we don't want to exaggerate all this, but they're all connected, because this is to do with the metabolism, this is to do with the hormones, and this is to do with the mood of the child. The child's mood comes top of the list, and you know that the child is drifting away if there is any imbalance in the body. The mind doesn't work on its own, my friends. There has to be a body thing, and equally the reverse area. So yes, I love you all very much. I think there's a lot of things that go on in my mind. There's too much to cover. We will do this over 3-4 sessions. I hope my friends from Kashmir are happy, because they were demanding this, Meghna. I want to know more about periods. Rekha, you're not teaching us the right thing. I said, yes, we will teach you the right thing, because it seems like a very novel subject in some parts of India, and they keep it very secret. They keep it very secret. And if you touch food, it will not get dirty or spoiled. In my family, they don't let me touch the dahi when I used to get my period. And that makes me so angry. Don't touch the pickles, don't touch the plants. There's no such thing. There's no such thing. These are not proven things. You know what Bubbly said to me once, for your information? Doesn't God get your periods?
Isn't that such a logical thing to ask? Exactly. If she's a woman and there is a goddess in Tamil Nadu who gets her periods every month, she gets, and Bubbly went there and said, "You and I are alike. So why do you have a statue and I don't?" So my point is, understand one thing: we argue, but we never argue straight. We argue for just to argue. But my daughter hit it there. I said, yes, then why do you tell me not to go to the temple? How do I become unclean? And she's not unclean. So I don't. I removed all the taboos. There are no more any taboos in our lives. We can go where we want. Let them be free. Because you start telling them that they don't know how to differentiate. Don't talk in front of dad. Don't talk in front of dadu. Don't tell anybody you got your periods. Why? Why? And don't tell them, because then, it's something which is my private affair. I want to tell, I'll tell. If I don't want to, leave me be. So all of you, please realize that we cause the confusion and say the child is confused. You are the contributing to the confusion. Yes. See you all. God bless you guys. Thank you. Thank you, Rekhama and Meghna. Such important aspects. Yes, it made me feel, I have a neurotypical daughter, and it made me feel the way I trained her, you all need to train your daughters the same way Meghna started. Parul, would you like to add something, some experience of yours? हाँ बिल्कुल समीक्षा, जैसे हर माँ का डर होता है वो ही मेरा भी था। जब हम थोड़ा सा संभलते हैं डाउन सिंड्रोम ब्लेस्ड बच्चा आने के बाद, तो आपको सलाह मिलनी शुरू हो जाती है कि कोई बात नहीं, लड़की है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, देन यूट्रस रिमूव करा देना, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो ना हो। मैंने कहा ऊंच नीच क्यों होगी, और किसी बेवकूफ इंसान के लिए ऊंच नीच के लिए हम अपने बच्चे का यूट्रस रिमूव करें? फिर तो हम सारी औरतों को यही कर देना चाहिए, है ना। हमें एक ऐसा समाज रखना चाहिए कि जहाँ ये ऊंच नीच हो ही ना। दूसरा, जब थोड़ी चांदनी बड़ी हुई और मैं चेन्नई पहली बार रेखा माँ से मिलने गई मातृ मंदिर में, और वहीं स्कूल में मैंने उनसे बैठ के पूछा कि माँ ये चीज आपने बताई, ये ऐसे हो जाएगा, स्किल्स ऐसे हो जाएंगे और ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, लेकिन पीरियड्स का क्या होगा माँ, पीरियड्स कैसे? तो माँ ने कहा कि सारी चीजें भगवान ने बिल्कुल देर से दी हैं, कि हर एक चीज बोलना बाद में सीखेगा, चलना देर से सीखेगा, लेकिन पीरियड्स एकदम टाइम पे आते हैं, वो आएंगे और उन्हें तुम्हें इस तरीके से हैंडल करना होगा। तो जब पहली बार चांदनी को पीरियड आए, वो 11 साल की थी, और अपनी हार्ट सर्जरी के बाद मैं पहली वेकेशंस पे अपनी बड़ी बेटी के पास गई हुई थी। पता नहीं कहीं से मुझे इंट्यूशंस थे कि बस होने ही वाला है, क्योंकि 11 साल की वो हो चुकी थी। तो हम वहां गए तो नेक्स्ट डे उसे स्टार्ट हुए, मैंने देखा, और मुझे लगा अब क्या होगा, मुझे शायद वापस जाना चाहिए या 5 दिन हमें घर में ही बंद रहना पड़ेगा, क्या होगा। एंड देन क्योंकि हमने, मेरी बड़ी बेटी भी है, तो हमने स्टार्टिंग से ही, लगभग वो 7-8 साल की थी, बल्कि उससे पहले ही वो देखती थी हमें कि हम लोग जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एंड ये क्या चीज है, उसे बहुत आसानी से पता था। उसे बल्कि ऐसा लगने लगा था धीरे धीरे कि ये कुछ बहुत ही अच्छा वाला मजेदार चीज है जो मम्मी एंड दीदी एंजॉय कर रही है और मैं नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद जैसे ही हमें लगा कि अब इसके आने वाले हैं, तो 8-9 साल के बाद हम उसे, उसकी दीदी भी वॉशरूम में उसे आने देती थी और मैं भी, हम उसके सामने आराम से बैठ के चेंज करते थे कि ऐसे ऐसे हम चेंज कर रहे हैं और ऐसे इसको लगाना होता है। तो वो पूरा प्रोसेस उसे पता था, और ये इतना आसान था, और मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि हमें ये छुपाना है, क्योंकि वो एक और चीज बन जाती है। तो वो पीरियड्स के बारे में सबके सामने बहुत ही आराम से बात करती है। जब वहां पीरियड्स उसे आए, बेशक मैंने उसे नहीं चेंज करने दिया, मैंने ही चेंज किए। और एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो समीक्षा, वो पूरा टाइम, वो पूरा 5 दिन मुझे पेन हो रहा था पेट में, एंड एवरी टाइम मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं वॉशरूम में जाती थी पैड लेके और चेंज करने बैठती थी, देन मैं रियलाइज करती थी कि मुझे नहीं, चांदनी को आ रहे हैं। एंड चांदनी वाज लाइक के तैयार हैं घूमने के लिए, बॉटल लिया ये, तो आज कौन से मॉल जा रहे हैं अंजे। तो हम लोग वापस आए, और लगभग 6 महीने लगे चांदनी को उस जगह पहुंचने में कि वो अपने आप
सब कुछ करने लगी। और ये एक दिन उसी ने मुझसे कहा कि मम्मा आप बाहर जाइए, मैं इसे खुद हैंडल करूंगी, मैं अपने आप चेंज करना चाहती हूँ, आप प्लीज बाहर जाइए। मैंने कहा आप कर लोगे? तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो जाएगा, घर में है, नेक्स्ट चेंज कर लेंगे, दोबारा करेंगे। तो मैंने कहा दिखाओ तुमने कैसे किया है। तो मैंने उसे वॉच करना शुरू किया, और मैं बता रही हूँ उसने मुझसे अच्छे पैड जो है स्टिक किया था। तो लेकिन एज ए मदर वो जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, मुझे बहुत लगता था, और शायद कहीं से कहीं ने उसने सेंस कर लिया था कि मम्मी को मेरा पैड चेंज करना अच्छा नहीं लगता है, वो स्मेल आती थी या कुछ भी। एक बार मैं गायनी के पास उसको लेके गई थी, हालांकि उसके पीरियड जिस दिन से आने स्टार्ट हुए एकदम रेगुलर हैं, कोई उसमें चेंज नहीं है। तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। रही बात प्यूबिक हेयर्स की, प्यूबिक हेयर्स के लिए मैंने अभी पिछले 2 साल से वैक्सिंग स्टार्ट कर दिया है उसका। जैसे ही मैं महीने में एक बार घर पे बुलाती हूँ, हालांकि मेघना को मैं देख रही हूँ कि वो इसमें शौक हो रही है, लेकिन एक छोटी सी उसे ब्राइब देने के बाद वो वैक्सीन के लिए जो है स्टार्ट हुई है। या तो वो मेरे यहाँ जो लड़की आती है उसके साथ उसकी दोस्ती है, तो उसने उसको इस तरह से किया। एंड आजकल वैक्स भी इतने एडवांस आ रहे हैं, एंड उस टाइम पे हम उसको या तो लैपटॉप में या फिर उसके फोन में एंगेज कर देते हैं, एंड हमें उस दिन उसे पिज्जा देना होता है। एंड मैंने ये देखा है कि वैक्सिंग कराने से वो 1 महीने के लिए बहुत क्लीन रहता है एरिया, प्यूबिक हेयर्स जो हैं, और वो ग्रोथ भी थोड़ी कम हो गई है। तो उससे मुझे ये भी मौका मिल जाता है कि मैं उसकी स्किन चेक कर सकूं आसपास की, क्योंकि अदरवाइज तो वो हमें वहां तक पहुंचने नहीं देती है, ना टच करने देंगे ना देखने देंगे। सर्दियों के मौसम में हम लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं कि नहाने के बाद आप कोकोनट ऑयल यूज कर लो थाइज एंड उस एरिया में। एंड बाकी टाइम में गर्मियों में हम नहाने के टाइम बाद आप मॉइस्चराइजर यूज करो, वो रहता है। बाकी इस तरह के जो मैं अपने पास रखती हूँ, इस तरह में हम मार्क कर लेते हैं कि ये पी आने वाला है, और नेक्स्ट मंथ में इसके 5 दिन आगे का यहाँ मार्केट करके रखते हैं कि ये आने वाला है। तो वो इसमें खुद ही देख के बता देती है कि अब आपके शुरू होने वाले हैं, अब मेरे शुरू होने वाले हैं। एंड किसी के भी पीरियड शुरू होने वाले, घर में कोई भी आए तो वो बता देती भाई अभी मम्मा के चल रहे हैं, अभी मेरे चल रहे हैं। आजकल उसके पापा अगर बाहर रहते हैं तो वो उनको भी बता देती कि अभी मम्मा की पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इसमें मैं कोई वो नहीं करती हूँ। चेंज करने वाली जो बात है जो मेघना ने भी बताई कि वो बहुत अच्छे से चेंज करना सीख जाते हैं, और न्यूज़पेपर हो तो ठीक है, अदरवाइज तो हम जो एनवलप आती हैं पेपर के, जो मेरी दवाइयाँ बहुत आती हैं, तो हम उनको उठा के रखती हैं, वो रैप करने के बाद उसमें फिर डबल रैप करके वो उनको खुद ही कर लेती है। रही बात पेंटी वाली, वो एरिया जो है तो वो मुझे ही वॉश करने पड़ते थे। वो जो उन्नति करती थी वो काम मैं करती थी, जो बहुत गंदा होता था मैं उसको मैंने कहा भाई नया ले आएंगे। तो लेकिन अभी चांदनी जो है, मैं देखती हूँ चांदनी की बालकनी में वो बहुत अच्छे से वॉश करके वो उनको सुखाए रहती है। और अपने लिए उसने थोड़ा सा इसमें आराम ढूंढ रखा है कि जब उसके पीरियड्स होंगे तो वो कोको जो उसका डॉग है उसको खाना नहीं देगी, वो साफ आके बोलती है देखो मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, खाना आप दोगी। जैसे ही मेरे पीरियड्स आते हैं तो वो कहती है आप आराम करोगी, अब खाना मैं दूंगी। तो ऐसे 2-3 काम उसने अपने लिए ढूंढ रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसे बताया कि आपको फूड टच नहीं करना या किचन में नहीं जाना है, लेकिन उसने अपना आराम ढूंढ रखा है इसमें कि ये मेरा है। और इसी तरीके से वो मेरा ध्यान रखती है, कभी भी पीरियड्स होंगे तो रेस्ट करो, आराम करो, So हाँ। तो इस तरीके से वो करती है। बाकी कोई और भी सवाल हो तो मैं जवाब देने yeah, Meghna, we really understand that you have a commitment coming up. You can log out and we can keep the discussion on. Thank you so much, Thank you. Meghna, for Thank you so much. God bless you, sweetheart. You gave your time. That's really important. Auntie, please, I'm Because coming always around there. your aspect is so important. God bless you, sweetie. God bless Thank you. you, everyone. Thank you, बहुत Parul. बहुत शुक्रिया मेघना, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। और We हम will catch you again for a next session. There'll be Yes. 3-4 sessions on this. Okay. Yes, Thank auntie. you, sweetie. Thank you. Thank you. So, Parul, there's another thing I want to tell the parents. Just like when children, babies, bed wet, we normally use rubber sheets, right? yeah. So now you get these beautiful sheets that you can put on top for like continence diapers. You get sheets that you can put on top of your beds so that they don't soil it. See, we can't keep telling them to be so careful. Sometimes it runs out. So I think we have to also prepare them with giving them the comfort zone.
and all the comforting things that, okay, this is available, and so you don't have to worry about it. Mama is not going to worry about the bed getting dirty or your underwear is getting dirty. I think यस माँ, और अभी तो अंडरवियर भी अलग स्पेशल तरह के आ रहे हैं इसमें. that is एंड मैं what चाहूंगी हमारे साथ हमारी दोस्त किरण है, वो भी अपने Exactly. एक्सपीरियंस शेयर करेंगी. But we must open a library where anybody who can't afford to buy disposable underwears or panties, we can send it to them. So small, large, and extra large. Please, Sammy, open the bank, and we will help all the parents with that. Even the sanitary pads, if they want a particular brand, we can send it across. DSFI takes complete responsibility for everyone's periods. Okay. Yeah. Thank you so much, Ma. Yes, Kiran, we are waiting to hear you. Yeah, I just wanted to add on to what Rekha ma'am had said, because I'm using it for my daughter. There are these Adira panties, period panties. So, it has a fine lining in between of a plastic kind of a thing, very comfortable. So instead, when you are during these periods, you can stick on the pads on these period panties. So the question of soiling doesn't arise. So the beautiful thing is, like, just before the periods are about to start, it might start at night or it might start in the morning, afternoon, anytime. So during those 2-3 days, you can even use these period panties. So the thing is, your dress doesn't get soiled. And while sleeping, your bed sheets won't get soiled. So that I found very useful for my daughter. So I thought I'll just share it with you all. Oh, that's so important, Kiran. Can you just give us the spelling, please, sweetheart? Ma'am, I'll just send you the picture. Send it. Adira. I got it from Amazon. These are Adira period panties. There are a lot of companies which are coming up, but the one which I am using is Adira. It comes in different sizes. Okay. Are they expensive, Kiran? No, ma'am, not very expensive. A pack of, say, 3 costs you about 850 or $900. Okay. So I think, Sammy, if parents want it and they can't avail of it, if they give their addresses, we will have it through Amazon, send it to them. Yeah. Okay. So we take complete It is very responsibility. convenient. It is very convenient. Thank you so much, Kiran. That was a big support and help for us. And I think parents, please reach out, ask us what we can do for you. And in every which way, when you're preparing your child, if you want support, please let us know. Yeah. Anybody would like to add anything else or ask anything? We are here to support. And as you have heard, you want DSFI to support you in any ways, providing you the material or for the management of anything, please reach out anybody, Brinda, Samiksha, Parul, or anybody else for that matter. Yes, Rachna, your hand is raised. You want to add something? मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. हाँ, रचना पूछो. एक्चुअली मैम, रेखा माँ शायद आप पहचानते हो, मेरी बेटी का नाम नेहा है. हाँ, बोलो. हाइपोथायरॉयडिज्म है उसे, और अभी वो करीब 1 साल से एंटी डिप्रेसेंट भी ले रही है, क्योंकि वो बहुत हाइपर हो रही है. तो अभी उसके 3.5 महीने से पीरियड्स नहीं आए. तो मैंने गायनेक दिखाया था, तो वो ये कह रही है कि एक तो कुछ थायराइड की वजह से और कुछ एंटी डिप्रेसेंट की वजह से पीरियड्स डिलेड हो जाते हैं. तो अभी मैंने एक ही गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वेट करके किसी और को भी दिखाऊं. तो मतलब मुझे लग रहा है कि अभी, क्योंकि वो तो 27 साल की है, तो पीरियड्स बंद होने का तो अभी कुछ मेनोपॉज वाला तो कुछ अभी स्टेज नहीं आना चाहिए. No, but how long have you been giving these antidepressants? मैम करीब 1 साल हो गया. 1 साल हो गया. तो इस साल में what are the changes? Periods ही नहीं आए कि बीच में आए थे? मैम उसको जुलाई के बाद से नहीं आए, पर उसको पीरियड्स हैं कभी 27 दिन में, कभी 30 दिन में, कभी 25 दिन में. 25 से लेके. This is expected, Rachna. Don't get worried. And it is difficult to keep a mental calculation of the dates and days, because इनका जो ये होता fluctuation हो जाता है. Because we are actually playing around with the normal functioning of the hormones.
by giving them mood stabilizers. So remember one thing, that there is a lot of complications, like even Bubbly was taking it, so it was also erratic for her. And we have to be prepared that when it happens, it happens. If it doesn't come for 3 weeks or it doesn't come for 3 months, don't get worried. Take it in its stand, and you can always start. Please ask your doctors whether you can give her B12, because B12 is an amazing, amazing vitamin for everything in the body, especially for girls. Vitamin B12 is actually the precursor and looking after all the medical issues. B12 में हमारा mood जो होता है ना, that gets stabilized with the 12, because otherwise they sometimes look very sad, and इसको handle करना जरा मुश्किल हो जाता है. So please ask them, and on the advice you can take B12, okay? But don't worry about the periods. The antidepressants definitely cause havoc. ओके ओके मैम, नहीं B12 की डेफिशिएंसी तो दोनों में है, नेहा में भी है, मुझ में भी है, तो हम लोग ले रहे हैं ना, तो okay, don't worry. I think we just have to take it one day at a time, okay? Okay ma'am, thank you ma'am, thank you. Yes, anybody else would like to ask anything or add? So Parul, it was such a beautiful discussion, right? About a beautiful part of being a woman. And we all understand with training and proper support and seeking support at the right time, caring and sharing, and managing all other aspects. I mean, and taking experts' opinion whenever needed. I think we all need it. We all undergo the same, and it's same for our girl child, right? बिल्कुल 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 सैमी। एंड दोस्तों, आप में से किसी के कोई भी सवाल है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, तो प्लीज बेझिझक होके आप अपना वीडियो ऑन ना करिए, आप ऑडियो ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिली, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। माँ नमस्ते। माँ नमस्ते। माँ हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ माँ कहीं में जाते हैं। बोलो। जी माँ वो आदिति को अभी 14 इयर्स हुआ है, तो उसी हिसाब से अभी मतलब इस महीने में उसका जो पीरियड आया था, जैसे 4 दिन तक ब्लीडिंग होता है वैसे हुआ, उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद 7 डेज से फिर से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हुआ 15 डेज तक, तो बंद नहीं हुआ, उसके बाद 16 डेज से बंद हो गया है। तो मैं नेक्स्ट महीने ये मतलब कैसे हो रहा है देखूं या गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाऊं कुछ? ना बिल्कुल बिल्कुल। उसका मूड कैसा है और वो कैसे एक्टिव है क्या? नहीं, वैसे ही चिड़चिड़ापन रहता है उसका। ओके, डोंट रश टू द गायनोकोलॉजिस्ट फॉर एवरीथिंग, ओके? वो भी यही कहेंगे, आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बट इफ देयर इज अ फ्लो फॉर अबाउट 15 days, there will be a weakness. So diet and vitamins will matter now. See, the thing is, calcium also is very important. Iron देना पड़ेगा. So iron through foods is a very good thing, but iron आपको आपके यहाँ पे डायटिशियन है क्या? नहीं मैं ना so I can आप can you send me a diet chart? आप क्या देते हैं उसको, एक दिन में क्या खाना खाती है? And because I am worried about the iron content. When we have periods for a long period, we support it through good foods like nuts and जो भी है. We have to look at the diet of a person who is before periods and during the periods, and as they're growing older, both for boys and girls, the diet matters the most. So people ignore the diet and think, oh, हमने तो multivitamin तो दे दिया है. Multivitamin is not खाना, okay? So whether we have to give her milk as a supplement for calcium, whether we must give her regular diet program, yet diet के and is she feeling dull? जी माँ, उसका मूड बहुत लो है क्या? हाँ माँ, कैसा है? हाँ वैसे ही मतलब अभी तो थोड़ा बुखार भी है। हेलो, सुस्त है क्या वो? हाँ मैम, थोड़ा बुखार है उसको भी, मतलब डाउन सा लग रहा है, इतना भी एक्टिव नहीं है।
डल है माँ डल। हाँ, तो डल है। वेट फॉर नेक्स्ट साइकिल तक तो एक बार वेट करो, ठीक है? जी माँ। नेक्स्ट साइकिल जब आएगा और ये रिपीट होगा, मेरे को फोन करो। माँ पहले ना उसका उसकी तो थायराइड का प्रॉब्लम है, तो पहले उसको मतलब मतलब 1 महीना 15 डेज या 16-17 डेज इसी तरह उसका पीरियड आ रहा था। अभी जैसे थायराइड मतलब ये डॉक्टर ने मेडिसिन दिए हैं, उसी हिसाब से ना उसका रेगुलर हुआ है 1 साल तक, 1 साल से रेगुलर हो रहा है। पर अभी मतलब इस महीने से ये वाला प्रॉब्लम आ गया है। तो ये टैबलेट आपने बंद कर दिया कि चालू नहीं है? मैम, नहीं चालू है, सब कुछ चालू है। कोई टैबलेट बहुत दिन तक काम नहीं करता है. That is, the system gets used to any tablet. So my point is, 1 साल के बाद that the child is now breaking from that thing, और बाद में she'll go back to the old thing. बार बार उसको 10 दिन या 15 दिन का periods है, तो we have to check it out. But you wait now and you see the next periods and call me. जी 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 माँ। Definitely call me after the next periods. We will get in touch with both the endocrinologist and the gynecologist. ठीक है? जी माँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा माँ। थैंक यू माँ। हमारे और किसी दोस्त का भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ इस फोरम पे सवाल पूछना मुश्किल है, तो हम में से किसी से भी अब अगर आप इस बारे में पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, सैमी से या रेखा माँ से या किरण से या मेघना से, तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे सेशन का टाइम खत्म हो गया है सैमी। Yes, it was a beautiful discussion, and we are celebrating the womanhood Funny, here. no, Sammy, that Yes, time ma'am. we never realize how quickly time passes when we are talking about subjects like आपके this. साथ माँ, आपके साथ समय का पता कहाँ चलता है? नहीं, ऐसे नहीं है, तू ऐसा देख ही मत यार। My point is, ऐसा होता आप दिख कहाँ रही हो? आंखें तरस गई आज तो। आज तो वैसे रहने दो, वो think of the Tonga. Yes, I'm thinking, मैं अभी टोंगा में ही फील कर रही हूँ अपने I आप को। wanted all the parents to come out with their questions openly. Unless you talk openly, this is going to be continuously brushed under the carpet. इसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। अगर इस फोरम में आप ओपन नहीं कर सकते हो, तो कहीं पर भी नहीं ओपन कर सकते हैं। Please do not wait for the right time. You have questions, I know it, but you will call me privately. I am saying we want you to open up because it is important. Somebody will tell you something I might not know also. So remember, everybody is not completely like, these 10-15 days of bleeding is worrying for a mother. It's very worrying. And I can understand what she's going through. Yeah. मिली। हेलो माँ, मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ, पूछो। जी माँ, वो जो आपने रायपुर में मुझे सजेस्ट किए थे जो CPF में ये यूज करने के लिए अदिति को, तो वो वाला यूज की हूँ, पर दिन में 1 घंटा ही अभी लगाती है, तो रात को वो यूज करने के लिए नहीं देती है। तो कुछ या मैं पर्सनली आपको कॉल करूंगी माँ? हाँ, पर्सनल आई एम ऑलवेज रेडी, आप फोन कर लो यार, डोंट वरी। जी माँ जी माँ जी थैंक यू। डोंट वरी, ओके। हमारा और कोई काम ही नहीं है यार, पूरा दिन वेट करते रहते हैं। जी माँ। Yes, Parul, you are on mute, Parul. I don't like you on mute. I don't like it. वृंदा जी, प्रोग्राम का समय खत्म हो गया है। अच्छा, Brinda का वो speech has been completely cut because we said we will support everybody. So now we said we are buying everything for everybody. So Brinda, DSFI. हाँ, बस ऐसी बातों को वृंदा जी सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो अच्छी बात है। चाहती है, come in front, Brinda, and say yes, we will support you. Whatever you say, ma'am. पता नहीं हाँ किया कि ना किया, कुछ नहीं, जो कुछ समझे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मैं क्या बोलूं? But everybody feel free to reach out and do not live in darkness or in ignorance or in doubt, because mind is your limitation. Capacity is not. Our children are more capable in understanding and getting the training.
And remember, the task you will. The word we have to use is do not feel embarrassed because of this. Please, please do not feel embarrassed. This is an open discussion, open forum. There is nothing to be embarrassed. This is your child. If you are embarrassed, can you imagine how embarrassed the child is? So what you feel, your child feels. Open up, talk, be absolute bindas. Bye, guys. Thank you, ma'am. Bye. Pass on the power. बहुत बहुत हैप्पी दिवाली सबको. अच्छे से अपनी दिवाली मनाइएगा, सेफ दिवाली मनाइएगा और मिलते हैं अगले. Continue the sessions. Yeah. कल गुरुवार वाला सेशन होगा मैम. That's Ritu, my friend. Yes. I'm not so sure Guruwar wala kal hoga. I'm not very We'll sure. let you know. We will let So you know. if you know, if there is, I'll definitely send out the information. So no Yeah. worries. Okay. Bye bye. Thank you so much, Bye-bye. Chitra. Thank you everyone for joining. Thank you, Parul. Thank you. Bye, Thank and you. end the session now, girls. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye.